Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of Daily News Analysis. कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. So before we start, please let me know if my voice is audible. Is my voice is audible? Am I visible to everyone? Okay, fine. So the newspaper is very important. If you talk about like The Hindu and Indian Express, the two prominent newspaper will gives you the information about what things is happening around us. ठीक है? So my name is Ashish Bhargav and here we'll discuss about the newspaper in detail. So what exactly we discuss in newspaper analysis? We discuss about national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss. And here is the quote of the day. Let us remember: one book, one pen, one child and one teacher that can change the world, and will ask you the questions. That's why here questions of the day. Quick tips. So dear friends, quick tips है क्या? Basically, quick tips which means that with the help of mnemonics, we'll learn something new. Stay tuned till the last. And here is the very first article, the talk about daily. आप देखेंगे आप न्यूज़पेपर आर्टिकल में तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के बारे में, जिसके लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉर्डर के पास, वो इश्यूज़ आपके सामने आती रहेगी. और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिसके लिए फार्मर्स फाइट कर रहे हैं अभी, वो क्या है? एक काइंड ऑफ मैंडेटरी मिनिमम प्राइस है. मीन्स दैट नो परचेज ऑफ दीज कम्युनिटी दैट कैन पे एनीथिंग लेस देन द डिक्लेयर प्राइस. इन शॉर्ट, इफ़ यू विश टू नो अबाउट कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या, तो मैंने आपको फिर से रिपीट करूँ, एक मैंडेटरी मिनिमम प्राइस है. उसके नीचे जो कम्युनिटीज़ होंगी वो डिक्लेयर प्राइस से नीचे हम नहीं लेंगे. राइट? क्या फॉर्मूला होता है A2 प्लस FL 50%, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी हम डिस्कस करेंगे. बट आपको मैं शॉर्ट में इस आर्टिकल में थोड़ी बहुत चीज़ें न्यू हैं. सो फार्मर्स आर बैक एट द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा दिस टाइम डिमांडिंग अ लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो क्या MSP हमने दी नहीं थी उनको? नहीं दी है, बट उनका कंसर्न है हमें लीगल गारंटी दो इस चीज़ की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, दैट कैलकुलेटेड एज C2 प्लस 50% एज अगेंस्ट द करेंट फॉर्मूला कॉस्ट A2 प्लस FL. अब ये है क्या? ये A2 प्लस FL जो है बेसिकली है क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे. दोनों में वो डिमांड क्या कर रहे हैं? C2 प्लस 50% एज अगेंस्ट द करेंट फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट A2 प्लस FL प्लस 50%. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? So this article attempts to clarify a few issues that relate to the legal guarantee and the implications of the C2 plus 50% formula. ठीक है? देखो इसमें क्या है. जुलाई 2022 का टाइम था जब एक कमेटी बनाई MSP के लिए. ठीक है? And committee is yet to submit its report, and the promise of the doubling farmers' income seems to have obviously peeved a few observation that to begin with. पहला, लीगल गारंटी का मतलब, लीगल गारंटी which means is different from a legal mandate MSP. Guarantees are to be honored by the government and mandatory mandate apply to all trade. करंट MSP क्या कहता है हमारा? करंट MSP हमारा ये कहता है, जो करंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम है दैट अप्लाइज टू 23 क्रॉप्स के ऊपर. कितने क्रॉप्स? 23 क्रॉप्स के ऊपर. 7, जिसमें कि 23 क्रॉप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. पहला आता है 7, जो आपका आता है 7 सीरियल्स. 7 आता है आपका इसमें सीरियल्स. 5 इसमें पल्सेस आते हैं, 5 पल्सेस. एंड थर्ड में आता है इसमें 7 ऑयल सीड्स और 7 ऑयल सीड्स. और इसमें है और कुछ बताओ? देखो, और उसमें बाकी अदर क्रॉप्स भी आते हैं. वो शेयर इन ग्रॉस वैल्यू जो है एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, दैट इज लेस देन 30%. सो द प्रोक्योरमेंट एट MSP इज primarily ऑफ पैडी एंड व्हीट, जो इनिशियली स्टार्ट किया गया था. ठीक है? सो द अदर्स फ्रॉम द
minuscule fractions of the total. So the current formula of calculation of MSP is A2 plus FL plus 50%, जो हमने आपसे डिस्कस की थी, right? Which is lower than C2, which means comprehensive cost A2 is paid out cost and FL is value of family labor. So MSP has effectively become the procurement price for rice and wheat. So the burden of procurement of physical distribution of food grain to 80 crore people, that would weigh heavily on policy options. बात करें हम इसकी, given the above context, what is meant by legal guarantee for MSP need clarity? ये legal guarantee का मतलब क्या है? क्या हम आपको क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको लिख के देगी, पेपर पे देगी, तब वो मानेंगे, या कुछ और है? देखो, if the idea is to move to right-based system as done by the National Food Security Act, यानी कि NFSA की बात करें तो, National Food Security Act की अगर बात करें तो, so a legal guarantee for MSP will only ensure that successive government will not be able to remove the provision of MSP from the policy framework, and the system will continue with modification. This could give additional protection for the farmers in the form of legislative backing for ensuring that the MSP regime that continues will continue for all 23 crops or more or less is a different matter. So guarantee or mandatory, if the interpretation of legal guarantee is that of mandatory minimum price as obtained in the case of sugarcane, where sugar जो mills होते हैं are required to buy and pay the government announcement support price, and the demand that brings into play a new set of complexity. A mandatory minimum price means to no purchase of these commodities that can pay anything less than the declared price. ऐसा समझो, बिफोर सोइंग सीजन अगर गवर्नमेंट ने वीट की प्राइस को फिक्स कर रखा है 80 रुपी पर के जी, 18 रुपीज़ पर के जी या 22 रुपीज़ पर के जी, तो उसके नीचे आप नहीं जा सकते, राइट? So the small traders that will find it impossible to operate. This would also mean that the government, instead of being the buyer or last resort, that will become the first and probably the only buyer in the market. The dangers of such a system are well known. Another danger of any mandatory provision is the likely proliferation of inspection and inspector. The harassment and rent seeking opportunity are too well known to merit description. अब ये क्या है? अब इसमें 23 क्रॉप्स क्यों हैं? अब शुगर केन के लिए FRP होती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस. सो इसका क्या मतलब है? देखो, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कि MSP किसी चीज़ पे देती नहीं, बट फार्मर्स का ये कहना है कि लीगल प्रोविजन दो, सो दैट उनको एडवांटेज क्या मिले कि आगे कोई भी सरकार आएगी तो उससे वो चेंज नहीं कर सकती. दिस इज व्हाट द आर्टिकल, क्रक्स ऑफ द आर्टिकल. अब देखो, थोड़ा टाइमलाइन को समझने की कोशिश करो कि MSP 1967 में, आफ्टर 1967, minimum support price is to be applicable across India, and the government set up the Agriculture Price Commission for fixing MSP for crops released by CACP, Commission for Agriculture Cost and Price, in 1985 में. 1967 में द फर्स्ट MSP की अनाउंसमेंट की गई. टाइमलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड? देखो, जब आपके एग्जाम से होते हैं वहाँ पे कई बार वो आपसे बैकग्राउंड में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? 1964 में क्या हुआ? जो फ्रूट ग्रेन प्राइस कमेटी थी अंडर LK झा टू पुश अप MSP रिजीम, ठीक है? यहाँ पे LK झा की कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात की गई थी. उसके बाद in 1957, if you talk about the Food Grain Inquiry Committee that established to address the agriculture earning issues. And before 1947, India agriculture was devastated under British rule. और अभी भी आप जानेंगे कि more than 50% of their population, their dependency on the agriculture land. And this is a very important fact that as per the Ministry of Agriculture data, हमारे देश में 50% से ज़्यादा जो हमारे फार्मर्स आबादी हैं वो अभी भी देयर लाइवलीहुड दैट डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है, चलो जी. ये इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू था, हम डिस्कस कर चुके हैं. इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज इस पर जो जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको रिवील नहीं करे थे डेटा कि हमें ये फंड कहाँ से मिला. और एक मोनोपोली थी इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की,
ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही इनकैश करना पड़ता था विद इन 15 डेज के अंदर, ठीक है। सो वाई इलेक्टोरल बॉन्ड वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। सबसे ज़्यादा फंड जो मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 2017 से 2022-2023 में वो 11,450 करोड़ का, ठीक है। और यहाँ पे 11,450 करोड़ में आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे जो बीजेपी है उनको 6,566 करोड़ मिला। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जिनको इनको जो मिला वो 55%। इंटरनेशनल कांग्रेस को 1,123 करोड़, टीएमसी, बीजेडी मतलब बिरजू जनता दल, डीएमके, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए क्या है, एटलीस्ट आपको 1% जो है आपको लानी पड़ती है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, या तो आपको इसमें लोकसभा इलेक्शन में। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो nearly 50% of pregnancy in India are high risk. So prevalence of high risk pregnancy was highest in Meghalaya, Manipur, Mizoram, Telangana, 60.3%, while lowest in Sikkim, Odisha and Chhattisgarh. एक स्टडी रिलीज हुई that analyzed the data of nearly 24,000 pregnant women in India has shown prevalence of high risk pregnancy to be high at 49.4%. About 33% of pregnant women had a single high risk factor. अब ऐसा क्यों है, देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इन मुंबई, उन्होंने ये चीज़ स्टडी करी। डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे जिसमें ये चीज़ें पता लगाने की कोशिश की, 50.6% प्रेग्नेंट वुमेन हैड नो हाई रिस्क फैक्टर्स। तो study found that pregnant women जो हैं that from the vulnerable population such as poor women and those who had no education had the possibility of having one or more risk factor for pregnancy. So the leading high risk factors were short birth spacing, the time interval between the last birth to the time of current conception, that being less than 80 months, adverse birth, that outcomes such as miscarriage, abortion, stillbirth, and finally, women whose most recent delivery was a cesarean section. दूसरी चीज़ क्या है, जो maternal risk factors है, that included the age of the mother, adolescent, more age of 15 to 17 years, and women older than 35 years. So यहाँ पे सबसे पहले आपको दो चीज़ें इशू समझनी होगी, वन इज चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग। रिस्क फैक्टर इतना ज़्यादा क्यों है, देखो जो लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स है इंक्लूडेड टोबैको यूज एंड अल्कोहल कंजम्पशंस, व्हाइल प्रीवियस बर्थ आउटकम्स दैट रिस्क इंक्लूडेड प्रेग्नेंट वुमेन with more than 5 children, women with short birth spacing and long birth intervals of over 59 months, and also women with a history of preterm deliveries, miscarriage, abortion of stillbirths, that were included under the category of previous birth outcome risk factor. Short birth spacing of less than 18 months between previous birth and current conception, that was observed in 31% of pregnant women, that followed by 19.5% of women with a history of adverse birth outcomes, either miscarriage, abortion or stillbirth. सो यहाँ पे जो शॉर्ट बर्थ की इश्यूज़ हैं, जो स्टडी है इसमें हाई रिस्क फैक्टर के बारे में बात की है. सो प्रपोर्शन दैट वर हाई रिस्क एट हायर अमंग वुमेन विथ नो एजुकेशनल कैटेगरी, जिसमें कि 22.5% है. जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी आप देखने को मिला वो है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इट मीन्स ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, एंड तेलंगाना 60.3% विद लोवेस्ट इन सिक्किम 33.3%. द जनरल, द रेबल एंड इंडिया, इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई है. देखो बेसिकली इसमें बात की गई है कि कैसे कैसे लाइक जो आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर, जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में चीज़ें दी गई है. सो इफ द सिविलियन लीडरशिप इज shaky and that
week for India, the questions will be who to engage with and for any meaningful progress in bilateral ties. So the outcome is that they're quite similar, that we can see the what is known for the मुनी अहमद और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस है उस पर क्या चेंजेस आएंगे वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है. जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कमेंट सेक्शन में कोई बताओ कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो इस्टेब्लिश इन विच ईयर. ठीक है, और मैं पर्सनली उसको रिवर्ट करूँगा. ठीक है, उस कमेंट के नीचे जो भी स्टूडेंट इसको रिवर्ट करेगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था. प्लीज़ डोंट से इसमें आप ऑप्शन दे दो. देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया GSLV. ठीक है, अब ये GSLV क्या है, वैसे तो इसकी फुल फॉर्म बताओ. GSLV क्या है और LMB क्या होता है भाई यहाँ पे LVM. सो वाई द GSLV रॉकेट इज कॉल्ड द नॉटी बॉय, बिकॉज यहाँ पे रॉकेट को लॉन्च किया इसरो ने. ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड दैट्स अ न्यू जनरेशनल मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इनसेट 3DS. इसका नाम क्या है माय फ्रेंड? इनसेट 3DS. So INSET 3DS का मेन क्या है? दैट मीन टू कैरी इनहेंस मॉनिटरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर पे, ओशियंस एंड जो बाकी एनवायरनमेंट वहाँ भी. अब यहाँ पे जो GSLV F-14 रॉकेट है, अब यहाँ पे इसका नाम नॉटी बॉय क्यों रखा गया? वाई इट इज कॉल्ड द नॉटी बॉय? GSLV जो है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है, जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो GSLV के साथ प्रॉब्लम क्या है? GSLV had flown 15 times before this and 4 of the flight was unsuccessful, a very high failure rate of any rocket. जो PSLV है, PSLV has failed only twice in 60 launches, including the first time जिसको PSLV को जो लॉन्च किया गया था वो 1993 में. So LMV or LVM-3 rocket has flown 7 times and never failed. GSLV most recent failure was in August 2021 when it was attempting to carry an Earth observation satellite EOS-3. मतलब बहुत बारी अनसक्सेसफुल हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया नॉटी बॉय, इसका निक नेम है. ठीक है, so it did have a successful launch after that in May last year, but the uncertainty over the performance had not dissipated completely. So what is the problem? So what is the problem? GSLV is a more powerful rocket than PSLV and can carry much heavier satellite. It can carry more than 2,200 kg to geostationary orbit and more than 6,000 kg to the lower Earth orbit. So its problems have mainly been with the cryogenic engine, जिसमें कि लो टेम्परेचर होती है, दैट पावर्स द थर्ड एंड फाइनल स्टेज ऑफ फ्लाइट. एंड क्रायोजेनिक इज द साइंस रिलेटिंग टू द बिहेवियर ऑफ materials at very low temperature. Cryogenic engines uses liquid hydrogen as the main fuel, and hydrogen is the most efficient rocket fuel. Is very difficult to handle in its natural gaseous form but manageable in liquid state. So it liquefies only at very low temperature, nearly to 50 degrees Celsius below zero. Though oxygen that is needed to burn this fuel also needs to be in liquid form. Oxygen is in a liquid state is about 90 degrees Celsius below zero. तो LMV-3 क्या है? In the meanwhile, India has managed to develop its own cryogenic engine as well as a result of decades of research and development. So this engine has an entirely Indian design developed with ISRO, and that it uses a different process to burn and fuel. It is closer to the design of Ariane rocket that were used by ISRO that till a few years ago to launch its heavier satellite. अब यहाँ पे बात की गई है राइट्स ऑफ सिंगल वुमेन. देखो ये जो लॉ है इसमें क्या चीज़ें कही है. पहले चीज़ जो राइटर है हमारी, ये एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैना कोठारी. So women recently approached the Supreme Court seeking the right to have a child through surrogacy as a single woman.
तो सरोगेसी क्या इज अ रेगुलेशन एक्ट है that permits only married couple or only a woman who is a widow or divorced between the age of 35 to 45. उनकी एज भी कंडीशन अप्लाई कर रखी है 35 से 45 के बीच में that to have children through surrogacy. It does not allow a single never married woman to use surrogacy for having children. जो petitioner है had challenged this provision of law as being discriminatory on the ground of her single status. Supreme Court, while issuing notice to the government, remarked that there were only other ways in which the woman could have a child. She could get married or adopt. It also remarked that she could not have everything in life. She had chosen to remain single, and in the institution of marriage was important in society, as children need to know their father. जो surrogacy regulation act है 2021 that does not prohibit divorce or widow women from having children through surrogacy. So women who choose single or never married, however, as seems to be stigma with negative stereotype or wanting to have it all and hence not allowed to have biological children. The sex-based inequality is still very present in a single woman in India compared to married or coupled people who are often described in positive terms. Single, never married women are assumed to be immature, maladjusted and self-centered. इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट थे उसके अकॉर्डिंग 2001 के अकॉर्डिंग 50.2 million single women were living in India. By the 2011 census, this number had risen by 39% to cross 71 million and in the next census. अब यहाँ पे देखो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, उसके लिए क्विक टिप्स मैंने आपको बताई थी, क्विक टिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है. हियर इज द वर्ड फ्रेज. एफ स्टैंड फॉर फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, इसमें फेसर्स, ये क्या इज अ काइंड ऑफ निमोनिक्स है. फेसर्स विच मीन्स फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश. दिल्ली सल्तनत के किंग को लर्न करने के लिए क्या आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए. वाने सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े. अभी क्या है. एस स्टैंड फॉर स्लीव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी एंड मुगल्स. देयर आर फ्यू स्टूडेंट हु आस्क अबाउट कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए. माय फ्रेंड्स देखो ये इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 15 देखो मैंने कैसे नोट्स विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स ये कैसे बनाए हैं. सो माइंड मैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. A4 शीट लेके आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. आर्टिकल 15 टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, 17 टॉकिंग अबाउट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 124 अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड 214 टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट. Where we talk about Article 51A talking about fundamental duties, Article 343 to 51 is talking about Hindi language, and Article 24 is talking about children below 14 years that cannot work. And here's related to emergency. Article 352, 56 and 60. 352 talking about national emergency, 356 state emergency, and Article 360 is finance emergency. Here is the questions of the day. So, uniform civil code that would provide for one law for the entire country applicable to all religious communities in their personal matters. Article 44 of the Constitution lays down that the state by a suitable legislation secure uniform civil code. कितने statements correct हैं? देखो, 2 is incorrect. A UCC would provide for one law for the entire country applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. So, all Hindus of the countries are not governed by one law. Not all Muslims, all or Christians. Corruption Perception Index that is released by whom? Economist Intelligence Unit, Oxfam International, Transparency International, and United Nations Office on Drugs and Crime. So, the right answer is Transparency International. Grammy Awards that honored exceptional accomplishment in the field of.
क्या होगा राइट आंसर? लिटरेचर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पब्लिक सर्व. C is the right answer. The labor force participation rate essentially tells what percentage of the total population want to be a part of the workforce. A low labor force participation rate means fewer people are making themselves available for economic activity. So only first statement is correct. B statement. देखो, a labor force participation rate essentially tells us what percentage of people who are within the working age, और working age क्या आपका 15 to 59 years, that groups want to be a part of workforce. So a low labor force participation rate undermines the country overall productivity and well-being because fewer people are making themselves available for economic activity. Demographic trap is a combination of, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ पे हाई फर्टिलिटी होती है एंड डिक्लाइन मोर्टालिटी which is death rates in developing countries, that resulting in a period of high population growth rate, which is PGR. Dear friends, this is very important to tell you. If you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Make sure इस वीडियो को please share to the maximum number of students, friends और different groups में so that they will get advantage. और if you have any questions regarding this, please let me know in the comment section. आपको ये सेशन कैसे लगी, उसके बारे में कुछ भी कहना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Thank you so much for joining with us. We'll meet you tomorrow for the same time. Till then, bye bye and take care.